Welcome to our class Deep Insights. So today we are discussing about educational psychology रो scope विषय में discussion करिबा. Scope of educational psychology. तो psychology educational psychology रो scope कोन रहउची देखिबा. Educational psychology mainly embraces 5 central themes in its scope. तो तार scope रे 5टा theme रहउची. तो ताकू देखिबा गोटे परे गोटे. First होची learner, study of individual differences, study of growth and development, study of behavior, study of personality, study of intelligence, creativity, attitude, aptitude. Aptitude means also knowledge. तो ये सब को स्टडी करा जाए तार स्कोप रे. लर्नर रो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्नर रो ग्रोथ और डेवलपमेंट, लर्नर रो बिहेवियर, लर्नर रो पर्सनालिटी, लर्नर रो इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ. तो लर्नर रो मेंटल हेल्थ भी तार स्कोप रे स्टडी करा जाए थाए. The learning process. Second रे तार स्कोप रो थीम रे आसुची the learning process. It implies teaching learning activities in which both teacher and learner involved. ताले learning process रे कौन होता है? Both teacher और learner शिक्षक एवं शिक्षार्थी इन्वॉल्व होता है learning process रे. It deals with the question like what happens when a child learns. कौन घटना घटिता है जेतबेले गोटे चाइल्ड शिक्षा ग्रहण करिथे. why learns काहेकि शिखिथे, and why learns what a teacher doesn't want him learn. ताले काहेकि गोटे पिलाटी शिखिथे जोटा कि ता शिक्षक चाहि नथाय ताकू शिखेबा पई. ए सब क्वेश्चन सहित डील करते हैं. It also applies techniques and methods of teaching to modify the behavior. ताले किछि टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स को अप्लाई करिथाय बिहेवियर मॉडिफाई हबो कार लर्नर रो बिहेवियर मॉडिफिकेशन पाएंगी किछि टेक्निक्स और टीचिंग मेथड को अप्लाई करते हैं कि टीचर. बिहेवियर मींस तारा नॉलेज देना कि तारा व्यवहार. तो बिहेवियर को मॉडिफाई करिथे. तापरे नेक्स्ट आछि लर्निंग एक्सपीरियंस. तार स्कोप रे जाउछि लर्निंग एक्सपीरियंस. Selection of desirable experience is the first and foremost step in an effective teaching learning process. It is a major area in educational psychology. ताले learning experience होउची major area in educational psychology. The learning situation. Learning situation कौन है दरकार? It refers to the environmental condition affecting both the learner and learning process. The environmental condition affect करता है काकू प्रभाव पकाइता है उभय शिक्षार्थी और शिक्षक ऊपर प्रभाव पकाइता है learning situation by environmental condition. The classroom setting, classroom climate, emotional and social climate of the school, teachers' attitude and behavior included under the learning situation. The learning situation ने कौन कौन जाउची? Classroom climate, classroom setting, emotional and social climate of the school, and teachers' attitude, behavior included in the learning situations. तो बर्तमान टीचर करो देखिए लास्ट आउची टीचर. Teachers' own mental health and satisfaction does have its impact on effective learning. His own role plays a vital role in the maximization of learning of students. A teacher करो mental health और satisfaction तार effect
लर्निंग उपरे प्रभाव पकई थाए एटा तार स्कोप रे जाउची तो फिफ्थ थिंग होची द टीचर देन आछी besides the following topics can be included under its scope तर यार आउरी स्कोप रो माने एजुकेशनल साइकोलॉजी रो स्कोप को आउरी व्यापक करा जायछि किबळी भाबरे जे एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स तार स्कोप रे जाउछन्ती एजुकेशन एंड डिसिप्लिन एजुकेशन आउ डिसिप्लिन शिक्षा और श्रृंखला तार स्कोप रे जाउछन्ती मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस मेजरमेंट मेजर करिवो आ इवैल्यूएट करिवो एजुकेशनल प्रोसेस देन आछि रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और रिलेवेंस मीन्स होज इंपोर्टेंस कौन एजुकेशनल साइकोलॉजी रो इंपोर्टेंस रोजी ताको हम डिस्कशन करबा बर्तमान टू नो एंड अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस तला हमें कौन जानिबा पिला मानक भितरे इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्ति व्यक्ति मध्य पार्थक्य सदा सर्वदा देखा देता जे सबू पिला माने एका परिका देखिया बा समस्त आईक्यू लेवल बा नॉलेज सेम से कथा तो नुहे तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें अंडरस्टैंड करबा आ जानिबा टू अंडरस्टैंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट तले हेरिडिटी आ एनवायरनमेंट को जानिबा अंडरस्टैंड बुझिबा टू नो मेंटल हेल्थ ऊपर जानिबा एजुकेशनल साइकोलॉजी थ्रू रे टू नो एंड अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस द लर्निंग प्रोसेस को बुझिबा ए एजुकेशनल साइकोलॉजी थ्रू रे टू अंडरस्टैंड एंड अरेंज लर्निंग सिचुएशन ताल केमती भाबरे अरेंज हुए लर्निंग सिचुएशन बा परिस्थिति बा एनवायरनमेंट ता संपर्क रे भी जानिबा ए सब जानिला परे ही हम जने उपयुक्त शिक्षक होई परिबा टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन करिकुलम कंस्ट्रक्शन करिकुलम केवल पाठ्यक्रम कंस्ट्रक्शन तैयारी होता है ताकू मध्य जानिबा ए एजुकेशनल साइकोलॉजी थ्रू रे बा तार इंपोर्टेंस होची या द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड गाइडेंस सर्विसेज नॉलेज ऑफ सेल्फ टू अंडरस्टैंड ग्रुप्स इफेक्ट अपॉन द चाइल्ड तले ग्रुप रो इफेक्ट कोन पड़ता है गोटे चाइल्ड ऊपर ताकू भी जानिबा तो ये गला तार रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रो रिलेवेंस हमें जानिले ताज भी एतिक थिला थैंक यू।